It says express 3 sine x plus 2 under root 2 cos of x plus 𝗨/4 in the form r sine of x plus alpha, where r is greater than 0 and alpha is between this. State the exact value of r and give alpha correct to 3 decimal places. Okay, now what's the form that you want? The form that you want is r sine of x plus alpha. Now for this, you need something like this: a sine x plus b cos x. You need to remember that this is the form that you need, right? A sine x plus alpha, it has to come from this form basically. Now, the problem is they have not given you this form in the question. They've given you something slightly different. This is the conversion that you can do, for which you can use the formula r equals a square plus b square square root, and then tan alpha equals b over a. But that's not the form you have because the angles here are different. So first of all, what you need to do is you need to apply the compound angle identity for cos and expand this thing. Let's do that first of all. So it becomes 3 sine of x plus 3 sine x plus 2 under root 2. What is cos of x plus 𝗨/4? If you look at the formula sheet, you would find the compound angle identity for cos written like this. It's cos of a into cos of b minus sine of a into sine of b. Let's apply that here. 2 under root 2 into cos of x into cos of 𝗨/4 minus sine of x into sine of 𝗨/4. Okay, this is what you do. I'll simplify this further. 3 sine x plus 2 under root 2 cos of x into 𝗨/4. Evaluate this on your calculator. Your calculator will give you under root 2 over 2 for this. Minus sine x. Evaluate this on your calculator as well. Sine 𝗨/4. Your calculator is going to give you under root 2 over 2 for this as well. Now simplify everything. This gives you 3 sine x plus 2 under root 2 into this thing. What's that? 2, in fact, just do it directly. 2 and 2, they get cancelled. And then under root 2 into under root 2, that's going to become 2. So you have 2 cos of x. You can put this on your calculator as well. You get 2 from that. Okay? Multiply this. 2 under root 2 and this. This is what you would get. And then the second term becomes 2 sine of x. Now simplify this further. This gives you sine of x plus 2 cos x. Now it's the form that you needed. This is what you need to convert to r sine of x plus alpha. What you can do is you can use the formulas for this. A is equal to 1, b is equal to 2, r equals square root of a square plus b squared, tan alpha equals b over a. Now it's in the standard form. You can just use these formulas directly. R equals square root of 1 squared plus 2 squared, and that becomes under root 5. And tan of alpha equals b, which is 2 over 1. Alpha equals, what do they want? They want your answer to be in radians and correct to 3 decimal places. R needs to be exact, so don't write decimals there. Tan inverse of 2, that gives me 1.107. You need 3 decimal places. That's the value of alpha. So now what does that form become then? Under root 5 into sine of x plus 1.107. This is what we get from this. Okay, make sense? No problems? Okay, I'm sorry. So some of these messages I'm just seeing now. It was not updated for me for some reason.
Okay, I'm sorry about it. So a lot of these messages I've just seen. I did not see them before. Okay, so under root 5. So those of you in YouTube, I just saw your messages. It was not updating for me the screen for some reason. Okay, under root 5 into sine of x plus 1.107. This is what I am getting from this. All right. Okay, so that was on that particular person. Okay, all right. Okay, so this is what we get, under root 5 into sine of x plus 1.107. Now it says, hence solve this equation. Now, how is this related to the previous part? What did we do in the first part? In the first part, what we have done is we have proved that 3 sine of x plus 2 under root 2 into cos of x plus pi over 4. This thing can be written as under root 5 into sine of x plus 1.107. This is what we've done in the first part. That if you had an expression like the one on the left side here, 3 sine x plus 2 under root 2 into cos of x plus pi over 4, you can write this as under root 5 into sine of x plus 1.107. Now let's compare the two expressions. Let's compare what we have here from the first part and what they have on the left side here. Now, one difference that you find is you have 3 here, they have 6. You have 2 under root 2 here, they have 4 under root 2. So basically, this whole thing is basically multiplying by 2. Okay, this whole thing is multiplying by 2. That's one thing. And then if you compare the angles, in place of x, they have half theta here. And in place of x, they have half theta here. How can we write this whole expression in this form? Let's think about this. First of all, if we multiply the whole thing by 2, what does that give us? 6 sine x. I'll replace x with theta as well. But let me just do this for now. I'm multiplying the whole thing by 2. 4 under root 2 into cos of x plus pi over 4. What is that going to become? On the right side as well, we would have 2 under root 5 into sine of x plus 1.107. Okay, that's one thing. Now, in place of x, they've got half theta. So we can do that replacement as well. We can say in place of x, let's put half theta. If we have half theta here on the left side, on the right side as well, in place of x, we are going to have half theta. So now we know that this whole thing that they have in this equation on the left side, we could write that as 2 under root 5 into sine of this whole thing. We could convert it to this form. Okay. And now we just have to solve this equation. Now that we have done this conversion, we need to solve this equation now. Okay, so the rest of it is not that difficult after this, once we figure this out, because now this equation would become, this equation can now be written as 2 under root 5 into sine of half theta plus 1.107 equals 3 on the other side. That is what this equation becomes. This is what you have to solve now. Now, how do you solve this equation? You can use a substitution for this. That makes things easier. You can say let A equals half theta plus 1.107. Now, the interval that they've given for theta is from minus 4 pi to 4 pi. That's the interval for theta. Theta is from minus 4 pi to 4 pi. Now, what about A? What is the interval for A going to be? In place of theta, let's input minus 4 pi once and see what that gives you. Minus 4 pi divided by 2.
plus 1.107. And that is giving me minus 5.176. And on the other side, if we input 4 pi there, if we input 4 pi, what does that become? That becomes 4 pi over 2 plus 1.107, and that is giving me 7.390. So the interval that we use for A now, that has to be from minus 5.176 to 7.39. So when we look for values in the quaternions, we would have to use this interval from minus 5.176 to 7.390. That will be the interval that we use here. Okay. Now let's solve this equation. So after doing the substitution, we would have something like this: 2 under root 5 into sine of A, that equals 3. Sine of A equals, do we need exact answers? No. So we can just write this in decimals as well. 3 divided by 2 under root 5. That is giving me 0.67082. Now let's find the basic angle. Sine alpha equals 0.67082. The basic angle turns out to be sine inverse of this, and that is giving me 0.735. Minimum 4 significant figures in your working, otherwise your answers will not be accurate. Okay. Okay, what I'll do is I'll add the link to the paper at the end. Okay, this is the basic angle, 0.7353. Okay, now once we've got the basic angle, now we need to think of the quadrants we can be in. The basic angle is 0.7353. Sine is positive in the first quadrant or in the second quadrant. These are the two possibilities that we've got. The basic angle could either be here or it could be here. These are the two possibilities, right? Now you need to think of all the possible values within this interval and see what possible values you can have in this interval. Let's think of the positive direction first of all. The first value of A that I'm getting is 0.7353. This is one possible value for A in the first quadrant. Then you could have another possible value of A in the second quadrant. What would that be? A equals pi minus 0.735. These are two possible values of A. Okay, sorry. These are two possible values of A in the first and second quadrants. Now, let's go further. Let's go one full circle and come back here. What is that going to be? Is that inside the interval? We will need to check that. Okay, because this is greater than 2 pi. We need to check if we get another answer inside the interval. How do you do that? 2 pi plus 0.7353. One full circle is 2 pi and then 0.7353 added. That is giving me 7.01. This is also in the interval. So we can also go one full circle and come back there to get another possible value for A. Another possible value of A that I'm getting is 2 pi plus 0.7353. This is also in the interval. This is giving me 7.0185. Okay. Then you can try going here again, but that's going to be outside the interval, so we don't consider that. You can try that because we're already very close to the upper limit. The next is going to be outside the interval. Okay. So that's done. Now let's go in the negative direction. Now we can also go in this direction because you have negative values in the interval as well. So you also need to check if there's any value in the negative direction. Okay, now what about this angle? This angle in the negative direction. What would this be?
minus pi minus 0.7353. Right, we're going in the negative direction. This is minus pi and then minus 0.7353 more. Let's see what this turns out to be. Minus pi minus 0.7353. That is giving me minus 3.87689. So we can say that's 8769. That's another value for A. Then you can go like this as well and see what that is. Most likely that's not going to be part of the interval because we've got 4 answers already. Most likely it's going to be outside. Let's just take this. Minus 2 pi plus 0.7353. Okay, so if I go like this in the negative direction up to this point, this is giving me minus 5.55. And that is outside the interval. Okay, that's outside the interval, so we do not consider that. These are the 2 possible values. These are the 4 possible values of A that we're getting, that I've written here. Now we find the corresponding values for theta for them. Let's put that substitution back. What was A equal to? A was half theta plus 1.107. So that either equals 0.7353 or half theta plus 1.107 equals pi minus 0.7353. That is giving me 2.4063, or half theta plus 1.107 equals this, or finally half theta plus 1.107 equals this. We will get 4 values for theta from here. Let's see what those 4 values of theta are. The first one gives us 0.7353 minus 1.107. 0.7353 minus 1.107 multiplied by 2, and that is giving me minus 0.74. Do they want a certain level of accuracy? No. Okay. This is minus 0.743. That's one value of theta. Okay. What else? 2.4063 minus 1.107 multiplied by 2. That's 2.60. That's another possible answer. 7.0185 minus 1.107 multiplied by 2. And that is giving me 11.823. I can say this 11.8. And then the final one, this is minus 3.8769 minus 1.107 multiplied by 2, and that is minus 9.97. These are 4 possible answers that we're getting from this. Okay. So this was actually quite tricky, this question as well. These are the 4 possible answers that we get. 1, 2, 3, and 4. That we are going to start from. Okay, so let's have a look at these questions. We have this inequality first of all, then this log question, then this complex number problem, which most of you are saying you're okay with. Okay, so this is the first question that most of you have asked about. Question number 4. Yeah, let's start with this one. It says, solve this equation. Solve the equation 2 cos x minus cos of half x equals 1 for x between 0 and 2 pi. All right, we want to solve this equation. Now, how do we do this? You see, you've got 2 different types of angles. Remember, whenever we're solving trigonometric equations, we want one single type of function and one single type of angle. So only one of sine, cos, and tan, and only one type of angle. Now, in both of them, we've got cos. But the problem is that the angles are different. This is half x, this is x, right? Now, what's half x? Do you know about any identity that you can use here for half x? There's a double angle identity, not a half angle identity, but what you can do is, you can actually use that. Remember, there are 3 forms of this identity that are given in the formula sheet. Cos 2a, that can be written as cos square a minus sine square a. And there are 2 other forms, 2 cos square a minus 1 and 1 minus 2 sine square a.
All right, these are three different forms that we've got for this double angle identity for cos. Now, if the angle that you want to expand, I'm sorry, go back there. Okay. If this is the angle instead, half x, and you want to simplify this somehow, there could be two ways of thinking about this. One way could be that we convert x to half x as well. In fact, I think that will be easier. Otherwise, we'll have square roots involved. Yeah, so let's do this. Since we want only one type of angle, we've got x here and half x here. What you can do is you can convert everything to half x, the smaller angle. Just like if this equation was 2 cos 2x minus cos of x equals 1, what you would do would be you would use the double angle identity for cos and convert this to perhaps 2 cos square x minus this part. And then we'll have x here and x here. So the double angle identity could be simplified to just this part. Now, similarly, here what we've got is we've got an x angle and a half x angle. What we can do is we can convert this bigger angle to the smaller angle somehow. What we can do for that is we can use this double angle identity to convert x to half x somehow. How can we do that? First of all, let's choose one of these three identities that we're going to be using here. We want everything to be in terms of cos, so it's going to be better that we use this form that has only cos on the right side. Otherwise, the first form has cos and sine both, the second has cos only, and the third has sine only. Let's choose the one that only has cos. So let's focus on this one. Let's focus on this particular form, that's 2 cos square a minus 1. Now, using this, what we can do is we can convert cos of x to cos of half x somehow. Let's see how we can do that. If on the left side we had cos of x, we could actually write it as something like this. We could say, since on the left side here, the angle is 2a, and on the right side, that angle is becoming a. What that means is whatever the angle is on the left side, on the right side, it becomes half of that. So if we had cos of x on the left side, what would you have on the right side if you were to expand it? You would get something like this. You would say this is 2 cos square half of this angle. What's half of x? Half of x is x over 2 and then minus 1. So what we can do is we can convert cos x to this form using this double angle identity. So let me repeat what we've done is we're saying in the double angle identity for cos here, on the left side, whatever angle we've got, on the right side, the angle is just half of that. If we had x on the left side, on the right side, half of that would be x over 2. When we use that, the benefit of doing that would be that we would have half x in this first term as well, and all the angles would be the same. And then we can just solve it like a quadratic and see what comes after that. Let me actually input this value first of all. In place of cos x, let me just input this thing, what I've written on the right side here, and see what that gives us. We've got cos square of x over 2 here. Let me put that here. Cos x can be written as this thing. So it becomes 2 into, this 2 outside remains as this. Inside you've got 2 cos square x over 2, or you can also write that as half x minus 1. And then this term as it is, which is minus cos of half x. And on the right side, you've got 1. This is the equation that you get after simplification. Now let's multiply 2 inside here. That gives you 4 cos square half x minus 2 minus cos of half x. Let's bring that 1 to the left side as well. And we get minus 1 equals 0 here. Let's simplify this further. And we get a quadratic equation that looks like this. 4 cos square half x minus cos of half x minus 3 equals 0. And what we can do now is we can use a substitution, right? This is the quadratic form. We can use a substitution. We can say, let this thing, cos of half x, be another variable. Let's say u equals cos of half x
And now this equation can be written as 4u squared minus u minus 3 equals 0. It's a quadratic equation. You can solve it like a quadratic. You'll get some values for u. Once you've got the values for u, you put the substitution back after that and solve it like a trigonometric equation. So we've got this quadratic. How do we solve this? Can we factorize this? This can be written as minus 4u plus 3u minus 3 equals 0. When we break the middle term, we take 4u common, and the factors are going to be 4u plus 3 and u minus 1, right? These are the two factors that we get. And that means u is either equal to minus 3 over 4 or u is equal to 1. Now you put that substitution back. You say either cos of half x equals minus 3 over 4 or cos of half x equals 1. These are the two values that we're getting for cos of half x. And now we can solve it, figure out what are the possible values for x from this. Now, how do you solve equations like these? When you have cos of half x here. Remember the interval that we're given for x, that's from 0 to 2 pi. So the x values are supposed to be between 0 and 2 pi. Let's write that down here. If x is between 0 and 2 pi, what about half x? What should half x be between? We divide the whole thing by 2, and that gives us that half x is supposed to be between 0 and pi. That's the interval that we've got for the angle half x. If you want to use a substitution here, some of you, in fact, it's easier to use a substitution here. If you want to do that, you can do that. You can use, let's say, let a equals half x. And here as well, let a equals half x, and then solve it in terms of a, and at the end, you could say, in place of a, put half x, or you can do it directly. It works both ways. It's your choice, however you want to do it. But what happens is when you adjust the interval becomes half x between 0 and pi. All right. And now let's find the basic angle. Let's find the basic angle from the first thing and the basic angle from the second thing. Cos alpha equals 3 over 4. You get a basic angle from here. You can see what that turns out to be. Make sure your calculator is in radian mode. If you convert that, radian cos inverse of 3 over 4. That's giving me 0.7227 in the first case. If you think of the quadrants now, cos is negative here. Where is cos negative? It's negative in the second quadrant or in the third quadrant. The interval that we have is from 0 to pi. Keep in mind, this is the interval that we are going to be using for half x. That's 0 and pi. That means third quadrant is not possible. We only have a value in the second quadrant, and that's going to be this angle alpha. So what does that mean? What's half x equal to then? The angle that we get is this one. What's this angle? Pi minus 0.7227, and we get a value of x from this. Pi minus 0.7227 multiplied by 2, and that will be your first value for x, which is 4.8377. If you round it off, that becomes 4.84. That's one possible value of x that I'm getting from this. And similarly, you find the basic angle here. You say cos alpha equals 1. You can think of graph as well if you want, but let's find the basic angle. Let's see what that turns out to be. Cos inverse of 1, that's giving me 0. Cos is 1 when the angle is 0, right? So within this interval, where is that going to be? Let's think about this. Cos is positive where? It's positive in the first quadrant and in the fourth quadrant. Basic angle of 0 could either be on this line here or on this line here. Which one do we choose? The one on the right side, right? Because here we've got both ticks. So this is the angle that we choose here. What's that angle? That's 0. So we get half x equals 0 from this. And the value of x that we get from this one is 0. These are the two possible values of x that we get. X is either equal to 0 or it's equal to 4.84. These are the two values of x that we get. Does that make sense to everyone? Any problem with this? So the tricky part here, the tricky bit was how to use the double angle identity here to convert cos x to cos of half x.
you think of it like this, that x is basically twice of half x, right? 2 times half x. So for that, we basically use this double angle identity. Since cos of 2a can be written as 2 cos square a minus 1, if we have x on the left side, on the right side, it will become x over 2 or half x. And that is what you can use to convert cos x to cos of half x as well. And then it just becomes a simple quadratic equation like this. You solve it like a quadratic, put that substitution back at the end, and find the values of x that we get from that. Let's start with question number 6. So it says express 5 sine theta plus 12 cos theta in the form r cos theta minus alpha, where r is greater than 0 and alpha is between 0 and pi over 2. This is one of the standard questions that you get in P3 trigonometry. So what do you have to do for this? You have these two formulas that you can just remember. R equals square root of a square plus b square, and also tan alpha equals b over a. Now, what are a and b here? If you look at the form that you're required to figure out, that's r cos of theta minus alpha. इसमें जो first function होता है, इस expression के अंदर वो आपकी फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, ठीक है? अभी इस केस के अंदर वैसे नॉर्मली जो है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर देता है. फॉर एग्जांपल अगर ये उसने पूछा होता, उसने वहां पे लिखा होता 12 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा, उसने इसी तरह लिखा होता. जनरली इन 90-95% ऑफ केसेस दैट्स व्हाट यू गेट. बट यहाँ पे उसने क्या किया, थोड़ा सा ट्रिक किया, उसने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया. ऑलराइट, तो आपको r cos थीटा माइनस अल्फा वाली फॉर्म में करना है. उसने यहाँ पे लिखा हुआ है 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा. तो आपको पहले तो इसको रीअरेंज करना है इस तरह से कि जो फॉर्म आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे cos चाहिए, तो इन दो टर्म्स में cos वाली टर्म पहले लिख लेनी है आपको. cos वाली टर्म पहले लिख लेनी है. सो लेट्स डू दैट. यू कैन राइट इट लाइक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड से this expression 5 sin theta plus 12 cos theta, this can be written as 12 cos theta plus 5 sin theta. इसको पहले आपने करेक्ट ऑर्डर में लिख लेना है, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे cos पहले आ रहा है इस फॉर्म में, तो आपने इसमें भी cos पहले लिख लेना है. Once you're done with that, whatever is the second number, that is going to be your b. Whatever is the first number, that's going to be your a. ठीक है? a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी. b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5. And all you have to do after this is just input these values in these two formulas. आपको इससे r और alpha मिल जाएगा, ठीक है? Let's do that. R equals square root of 12 squared plus 5 squared, and that gives you 13. The value of r turns out to be 13. And tan alpha equals b, which is 5 over 12. And you can find tan inverse of this. Now, if you look at the interval that's given, that's from 0 to pi over 2. तो आपने कैलकुलेटर अपना रेडियन मोड में रखना है. So you have to be careful with that. Degrees में आंसर नहीं देना है, यहाँ पे रेडियंस में रखते हैं. Interval is given in radians. Okay. So alpha here turns out to be tan inverse of 5 divided by 12, which is giving me 0.3948. That is what I'm getting. ठीक है? ये मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई. नॉर्मली उसने यहाँ पे ना नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस लिखा होता है कि कितने डेसिमल प्लेसेस आपको चाहिए. यहाँ पे नहीं मेंशन, तो आप उसको मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे. ज्यादा लिख दें उससे, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए. तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, ठीक है? सो नाउ व्हाट्स द फॉर्म दैट वी वर लुकिंग फॉर? r cos theta minus alpha. उस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 into cos of theta minus 0.3948. And that's the form that you were looking for. ये आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है? So that's done. That was the first part of this question. Walaikum assalam, Hussein and Rayan. Let's do the next part now. Next part में वो कहता है, hence solve this equation 5 sin 2x plus 12 cos 2x equals 6 for x between 0 and pi. How do we do this now? Now, how is this related to the previous part? आपने पिछले part में क्या किया यहाँ पे? First part में आपने किया ये है कि आपके पास ये expression था 5 sin theta plus 12 cos theta
इसको आपने कन्वर्ट कर लिया है इस फॉर्म में 13 cos of theta minus 0.3948. This is what we have done in the previous part. ठीक है, ये एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसने जो इक्वेशन दी हुई है, कंपेयर इट विद व्हाट वी डिड इन द फर्स्ट पार्ट, उससे क्या चीज यहाँ पे सिमिलर है। अब देखिए लेफ्ट साइड पे जो आपके पास ये फॉर्म आ रही है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैव देयर इन दिस इक्वेशन एज वेल। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, रिमेंबर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, यू नीड ओनली वन टाइप ऑफ फंक्शन एंड ओनली वन टाइप ऑफ एंगल। यहाँ पे फंक्शंस एंगल्स तो ठीक है, दोनों 2x हैं, वी कुड वर्क विद दैट। द प्रॉब्लम इज एक साइन आ रहा है, एक कॉज आ रहा है, आपको सिर्फ एक फंक्शन चाहिए होता है, तो इसको एक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए हम इस फर्स्ट पार्ट को यूज करते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा अगर 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा हमारे पास होता तो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। अब ये नीचे इक्वेशन दी हुई है, उसमें थीटा की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, तो आप जो राइट साइड वाली फॉर्म है उसमें भी थीटा की जगह पे अगर 2x डाल दें, ये जो हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में किया था उसमें थीटा की जगह पे 2x अगर डाल दें तो ये इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो सकती है, वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज 13 cos of theta minus 0.3948. Left side को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। Now what do we have on the right side? On the right side we have 6, and now we can solve this equation. Okay, and now how do we solve this equation? One way to do this is using substitution. So that's what we can do. ये जो अंदर वाला पूरा angle है, remember your angle is this whole thing. This whole thing is the angle. तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को किसी और लेटर से डिनोट कर लेते हैं। Let's say this is A. So we say let A equals theta minus 0.3948. All right. So now the equation therefore becomes 13 cos of A equal to 6. इस इक्वेशन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, A की वैल्यूज फिगर आउट कर लेते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज फॉर थीटा निकाल लेंगे उससे। ठीक है, so what does this become then? It becomes cos of A equal to 6/13. Find the basic angle. Cos alpha equals 6/13. यहाँ से आपको basic angle मिलेगा इसका। Let's see what that turns out to be. Cos inverse of 6 divided by 13. That's giving me 1.091. That's the basic angle that I'm getting. I can have one more decimal place if I want. 1.0911. That's what I'm getting. Okay. अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिमेंबर जो इंटरवल हमें दिया हुआ था ऊपर वो थीटा का इंटरवल था, इनफैक्ट एक्स का इंटरवल था। ऑलराइट, ऊपर जो हमें इंटरवल दिया हुआ था वो एक्स का इंटरवल था। तो हम यहाँ पे सो आई शुड हैव एक्चुअली रिप्लेस्ड दिस देयर एज वेल। यहाँ पे मैंने लिखा है थीटा की जगह पे यहाँ पे 2x डाल देते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो है वो इक्वेशन x के टर्म्स में, so this is 2x and this is also 2x here, so it's 2x minus this। तो ऊपर हमारे पास इंटरवल किस फॉर्म में था, इंटरवल वाज फॉर x was between 0 and pi। अब इसको आपने क्या करना है, a की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो अब वो क्या हो जाएगा, a का इंटरवल क्या होएगा, आप देखें एक दफा 0 इसमें इनपुट कर दें, x की जगह पे 0 डाल दें। If you input x equal to 0 here, what is that going to give us? That's going to give us minus 0.3948। और फिर एक दफा हम क्या करें, पाई डाल दें इसके अंदर and see what that gives us. So let me calculate that. 2 pi minus 0.3948, and that's giving me 5.888 here. ठीक है, तो a का जो इंटरवल है that is from minus 0.3948 to 5.888। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, कोऑर्डिनेट्स में उस इंटरवल के अंदर आपने देखना है कौन से एंगल्स आ सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर आवर कोऑर्डिनेट्स। नाउ cos is supposed to be positive। cos पॉजिटिव किधर होता है, cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। दीज आर द टू क्वाड्रेंट्स दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर। Now let's look at the first quadrant. First quadrant में हमारे पास ये एंगल क्या बनता है, a equals 1.0911। Is that in the interval that we have? Well, that is in the interval. वो इस interval के अंदर आ रहा है, so that's one possible value of a that we have. We say
a equals 1.0911. Okay, what could be another possible value for a from this? आप यहाँ पे पूरा एक सर्कल घूम के जाएं and go in the fourth quadrant. एक तो first quadrant हो सकता था, दूसरा आपका fourth quadrant हो सकता है. यहाँ पे fourth quadrant में जाने के लिए you can go like this and see what this angle turns out to be. Let's figure this out. ये angle क्या होएगा? 2 pi total angle होता है circle का, उसमें से minus कर दें 1.0911 and let's see what that turns out to be. So let me calculate that. 2 pi minus 1.0911 and that's turning out to be 5.192. Okay, this is the other value that I'm getting for a. Is this in the interval? That is also in the interval. ये भी interval के अंदर आ रही है तो उसको भी use करेंगे हम. We say a equals 5.192. अब इससे अगर आगे जाएंगे दोबारा से तो वो interval से बाहर चले जाएगा. लेकिन अब आपको क्या करना है? आपको नेगेटिव साइड पे भी चेक कर लेना एक दफा. ठीक है? So let me actually just take it to the side a bit. We have some space here. Okay, so these are the two values of a that we're getting until now. Is there another possibility? आपके पास देखिए इंटरवल नेगेटिव साइड पे भी जा रहा है तो आप नेगेटिव साइड पे भी देखना पड़ेगा आपको. नेगेटिव साइड पे दिस इज द फर्स्ट एंगल दैट यू आर गेटिंग एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी -1.0911. नाउ दिस इज आउटसाइड दिस इंटरवल तो आप इसको नहीं कंसीडर करेंगे. ठीक है, आपके पास a की सिर्फ यही दो वैल्यूज आ रही हैं. a equals 1.0911 and a equals 5.192. What do we do at this point? वो जो ऊपर हमने substitution की थी वो वापस input कर दें and see what that gives us. 2x minus 0.3948. This is what a was. तो a की जगह पे अब वो डाल दें वापस. This should equal 1.0911. यहाँ से आपके पास x की एक वैल्यू आएगी. How would you calculate that? 1.0911 plus 0.3948. Divide that by 2 and that gives you 0.7429. So that's 743. This is one value of x that we're getting from this. ठीक है? Similarly, do the same for the other one. a की जगह पे आप वापस क्या करें? 2x minus 0.3948 डाल दें. That should equal 5.192 and calculate x from this as well. So 5.192 plus 0.3948, that divided by 2, that gives us 2.793. This is the other value of x that I'm getting from this. So the two values of x that we get as answers here, they are 0.743 and 2.793. Okay, take it, good. Acha, question number 8. By first expanding cos square theta plus sin square theta whole raised to power 2, show that this is true. Acha, अब let's just follow instructions. इसने क्या कहा है? आपने पहले इसको expand करना है cos square theta plus sin square theta का whole square. अच्छा, you know कि ये 1 होता है, right? लेकिन इसको 1 में convert करने का फायदा नहीं है, वो 1 square ही हो जाएगा, right? मजा नहीं हुआ? 1 आ रहा था, वो तो 1 तो आ जाएगा of course. इसको आपने 1 नहीं करना है ना, इसको आपने expand करना है proper. उसको 1 में convert नहीं करना. इसने उसको expand करने का कहा as it is, so we just expand that without converting it to 1. Okay? अच्छा, let's do that. Cos square theta plus sin square theta का whole square. ये हमें evaluate करना है. So that's a plus b whole squared. That's a square. वो क्या हो जाएगा? Cos raised to power 4 theta plus b square. That's sin raised to power 4 theta plus 2ab. That's going to be 2 cos square theta into sin square theta. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. इसको एक्सपैंड करके अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे? cos raised to power 4 theta plus sin raised to power 4 theta एक साइड पे होने चाहिए. Everything else on the other side. Let's do that. इसको हम अगर switch कर दें
या चलो लेट्स से एक्चुअली कीप इट लाइक दिस, इसको मैं कर लेता हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर्ड minus 2 cos square theta sin square theta. On the other side, I have cos raised to power 4 theta plus sin raised to power 4 theta. एक साइड पे तो ये आ गया, मुझे ये चाहिए था एक साइड के ऊपर. अब दूसरी साइड के ऊपर I have to have this somehow. अच्छा अब आप देखें, आपको पता है cos square plus sin square तो 1 होता है. You can convert it to 1, right? So that's 1 squared 2 cos square theta sin square theta. Now you've got to be now you've got to take a hint here. ये क्या लिखा हुआ है एंगल 2 थीटा, यहाँ पे एंगल्स क्या आ रहे हैं आपके पास थीटा. सो बेसिकली डबल एंगल आइडेंटिटी पे यूज हो रही है यहाँ पे टू डू दिस कन्वर्जन. साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी क्या होती है, यू गॉट द फॉर्मूला शीट ऑन द साइड. ये आपके पास साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी है. साइन 2a इज आइडेंटिकल टू 2 sin a cos a. So that is sin 2a identical to sin 2 sin a cos a. यहाँ पे साथ लिख लेते हैं. So we have that visible here. तो basically हम अगर यहाँ पे 2 cos थीटा sin थीटा किसी तरह से बना लें, लेकिन वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे तो स्क्वायर्स आ रहे हैं, राइट? स्क्वायर हम अगर होल लगाते हैं यहाँ पे cos थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर अगर कर दें, हम इस तरह लिख सकते हैं ना इसको. cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा है, हम इसको cos थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, पूरे का स्क्वायर लगा सकते हैं. गॉट 2 आउटसाइड स्क्वायर. अब हमें करना क्या है, हमें ये फॉर्म चाहिए जो हमारे पास उस आइडेंटिटी के अंदर आ रही है. आइडेंटिटी के अंदर कौन सी फॉर्म आ रही है, 2 sin a cos a. हमारे पास सिर्फ साइन और cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 नहीं आ रहा है यहाँ पे. हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 ऐड करना है अंदर किसी तरह से. वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं एक अंदर, कहते हैं लेट्स मल्टीप्लाई बाय 2 हियर. लेकिन अब रैंडमली खुद से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना कोई चीज. आपने 2 अंदर मल्टीप्लाई किया, तो एसेंशियली आप क्या कर रहे हो, 2 स्क्वायर्ड से मल्टीप्लाई कर रहे हो इस एक्सप्रेशन को. तो उसको बैलेंस करने के लिए आप बाहर उससे डिवाइड कर दो. उसको बैलेंस कर दिया आपने, अंदर आपने 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, बाहर आपने डिवाइड कर दिया ताकि वो ओवरऑल बैलेंस हो जाए. इसका फायदा क्या हुआ, ये आपके पास वो साइन 2 थीटा वाली फॉर्म बन गई. एंड दैट गिव्स यू 1 माइनस 1/2. ये 2 और 2 स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, आपके पास 1/2 बच गया. 2 cos थीटा sin थीटा क्या होता है, दैट इज sin 2 थीटा. अंदर आपके पास आ गया sin 2 थीटा का होल स्क्वायर, एंड दैट कैन बी रिटन एज 1/2 sin square 2 theta. And that's what we had to show there. Okay, does that make sense? Fazan, which step? ये नहीं समझ आया, ये क्यों माइंड कर दिया, और तो हमने कुछ नहीं किया. सेकंड स्टेप में मैंने सिर्फ ये किया कि राइट साइड पे इसको मैं लेफ्ट पे ले गया हूँ. वाई, बिकॉज जो प्रूव करना था उसमें मुझे एक साइड पे ये चाहिए, तो मैं राइट साइड वाला जो वो चीज थी उसको लेफ्ट पे ले गया. That's all I've done, right? And then I've changed this thing to 1 because sin square plus cos square is equal to 1. और उसको आगे सिंप्लीफाई कर लिया. बट देन मुझे डबल एंगल चाहिए था, डबल एंगल में मुझे 2 sin a cos a वाली फॉर्म चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे 2 अंदर लगा दिया. लेकिन वो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे बाहर फिर 2 उसके डिवाइड करना पड़ा, बिकॉज अंदर मैं 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया मैंने अंदर, तो बाहर भी मैंने 2 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया टू बैलेंस दैट. ओके, हमजा गलत बात है ये, या थोड़ा सोचना पड़ता है. ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर होता है कि आपको उसी पॉइंट पे कुछ इस तरह से नई चीजें फिगर आउट करनी पड़ती हैं. बट आई होप दैट मेक्स सेंस. ओके, ऑल राइट. हमें कैसे पता चलेगा 2 स्क्वायर को डालना है, हमें इस तरह पता चलेगा 2 स्क्वायर को डालना है, क्योंकि हमें फॉर्म क्या चाहिए, हमें चाहिए sin 2 थीटा. हमें sin 2 थीटा होल स्क्वायर ये चाहिए. अब sin 2 थीटा कैसे आएगा, हमारे पास एक ही आइडेंटिटी है साइन की,
2 sin A cos A, राइट। हमारे पास सिर्फ ये आ रहा था sin थीटा cos थीटा, 2 नहीं था वहां पे, तो हमने 2 वहां पे डालना था किसी तरह से, तो हमने 2 डाल दिया, लेकिन खुद से वैसे रैंडम तो नहीं डाल सकते ना। अब जब 2 डाला वहां पे, तो उसको बैलेंस करने के लिए जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 स्क्वायर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों किया हमने? क्योंकि हमने ये आइडेंटिटी यूज करनी थी, इसलिए हमने किया। ओके, बिकॉज फाइनल आंसर में हमें sin 2 थीटा चाहिए था वहां पे। ऑल राइट, ओके, गुड। Okay, that was the first part. Let's look at the second part now. Hence, solve this equation. यानी कि आपको first part use करना है, cos raised to the power 4 theta plus sin raised to the power 4 theta. आपने prove किया है कि that is the same thing as this. उसको इस तरह replace कर देते हैं, 1 minus half sin square 2 theta, that equals 5/9. 1 minus half sin square 2 theta, and yeah, so that's fine. Now we just have to solve this. I can take that to the right. 1/2 sin square 2 theta. 1 minus 5/9, that's going to give me 4/9. And then sin square 2 theta becomes 8/9. ठीक है? अच्छा, sin square 2 theta, remember this notation? हमने बहुत दफा ये डिस्कस किया है कि sin square something, that's the same thing as saying sin of that का whole square. So sin square 2 theta का क्या मतलब है? It's the same thing as saying sin 2 theta का whole square. That equals 8/9. तो अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? We will take square root on both sides. इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Square root of 8/3. Are we missing something here? Are we missing something here? Is this fine? ये बहुत सारे लोग ये कर देते हैं, एक चीज यहाँ पे मिस कर देते हैं, वो क्या चीज है यहाँ पे? प्लस माइनस, राइट? प्लस माइनस हमने मिस कर दिया। स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं प्लस माइनस लगाना होता है, unless there's a reason not to, right? In general, we always put plus minus. So आपके पास दो वैल्यूज आ रही है यहाँ पे, either plus square root of 3 or minus plus square root of 8/3 or minus square root of 8/3. Now what do? We find the basic angle. Basic angle find कर लें, sin alpha equals square root of 8/3. Basic angle के लिए तो उसको पॉजिटिव कर देते होते हैं। बेसिक एंगल देख लें क्या आ जाता है डिग्रीज में, रेडियंस में। डिग्रीज के अंदर है 0 से 180. ओके, साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 3, दैट गिव्स अस, रेडियंस में क्या होगा इसको, 2 डिग्री। पेपर 3 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर्स के अलावा आपने हमेशा रेडियन यूज करना है, कीप दैट इन माइंड। ट्रिग्नोमेट्री में कभी कभी डिग्रीज यूज करेंगे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। वेक्टर्स में कभी कभी डिग्रीज यूज कर सकते हैं, अगेन क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, लेकिन इनके अलावा हमेशा रेडियन ही हुआ करेगा। इन दो टॉपिक्स के अलावा हमेशा रेडियन होगा, कभी डिग्रीज नहीं होगा पेपर 3 के अंदर। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे डिग्रीज के अंदर क्योंकि उसने इंटरवल दिया हुआ है, इसलिए हम डिग्रीज यूज कर रहे हैं। तो बेसिक एंगल टर्न्स आउट टू बी 70.53 डिग्रीज, दैट्स द बेसिक एंगल। ओके, 70.53 स्क्वायर रूट ऑफ 8/3, ये हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेंट्स में देख लेंगे। साइन इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पे तो दोनों हो सकते हैं। सो वी कैन बी एनी ऑफ द इन एनी ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स, लेकिन इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 से 180। दैट मीन्स आइदर द फर्स्ट क्वाड्रेंट और द सेकंड क्वाड्रेंट। इनमें बेसिक एंगल आप देख लें, 70.53 या तो यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, 70.53। एक एंगल आपके पास आ गया 70.53 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल क्या आ जाएगा, 180 minus 70.53।
But these are not the values of theta. These are values of 2 theta. 2 theta is either equal to this or equal to this. And I will calculate theta from this. यहाँ से आपके पास आ जाएगा 35.26 आते हैं, 7 आते हैं, जो भी आएगा इसको 3 कर देते हैं. 35.3 degrees and we get some value of theta from here. या देख लें क्या आती है. 180 minus 70.53 divided by 2, that is 54.7 degrees. These are the two values of theta that we get. 35.3 or 54.7. Oh yes, you are right. You're actually right. हमारे पास यहाँ पे क्या था, 2 theta था, so we are missing something here. You're absolutely right. हमने एक चीज यहाँ पे मिस कर दी. हमने क्या मिस कर दिया यहाँ पे? हमने इंटरवल एडजस्ट नहीं किया. Thank you for the reminder. Theta 0 से 180 तक है, so don't forget it like I did here. आपने रेंज एडजस्ट करनी है, right? Theta हमारे पास कहाँ पर था इधर? Okay. Theta was from 0 to 180. रेंज एडजस्ट करना is very important. 2 theta की रेंज क्या हो जाएगी? 0 से 360. तो जो एंगल्स देख रहे होंगे वो एक्चुअली आप सारे कोऑर्डिनेट्स में देखोगे, बिकॉज 0 से 360 है, प्लस माइनस है. We're going to look at all 4 quadrants. We're going to look at all 4 quadrants. So you got here and here. ये सारे quadrants में देख लेंगे. So you have 2 more values as well. Let me write them there. ये 2 values ये आ गए. So we got theta equals 35.3. We got theta equals 54.7. We also have 2 theta equal to 180 plus 70.53. We'll get something from that. Can somebody tell me what this is? And we also have 2 theta equals 360 minus 70.53. We'll get something else from here as well. Okay. Achha. 250.53 divided by 2, that is 125.3. And the last one is 360 minus 70.53 divided by 2, that is 144.7. So we've got these 4 values of theta. Acha. Express 5 sine x minus 3 cos x in the form r sine x minus alpha, where r is greater than 0 and alpha is between this. Now this part is relatively straightforward, but इसका second part हमने देखना है, so उसके लिए हमें first part करना पड़ेगा. अब इसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है हमारे पास, ये फॉर्म है, इसको हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. We've got the formulas, you can just remember them. You don't have to show the whole proof for this. What you'll do is you've got r equals square root of a square plus b square, where what does a mean? What does a represent? This first number that you have here, that's a. The second number that you have here, that's b. Ignoring the sign. ठीक है, minus sign को नहीं consider करना. Sign को ignore करके the numbers that you've got, they are a and b. Okay, so r equals square root of a square plus b square, and tan alpha equals b over a. आपने सिर्फ ये formulas apply करने हैं, आपके पास वो दोनों values आ जाएंगी. r equals square root of a was 5 square, b was 3 square, and you'll get some result from this. 25 plus 9, that is 34. r equals square root of 34. ये value आ गई. Now we've got tan alpha. Tan alpha equals b over a. B is 3, a is 5, and we get a value of alpha from this. We only need acute angle, तो हम वो निकाल लेंगे यहाँ पे. Tan inverse of 3 divided by 5, and the answer has to be in radians. Keep that in mind. Range आपकी radians में दी हुई है, so आपने radians में answer देना है. या देखें क्या आता है. I'm going to convert my calculator to radian mode and see what it gives me. 0.54. That's what I'm getting. Now keep in mind, यहाँ पे जो उसने instruction दी हुई है, it's absolutely necessary to follow this. उसने कहा 2 decimal places. You have to write it to 2 decimal places. इसको 3 decimal पे लिखेंगे, you lose a mark. इसको 1 decimal place पे लिखेंगे, you lose a mark. Exactly follow करना है उसको. ठीक है? Okay. Good.
दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें आपको ये दो फॉर्मुलाज अप्लाई करने हैं। आप लोग अक्सर क्या करते हैं, वो पूरा वो प्रूव करने बैठ जाते हैं। यू डोंट नीड टू डू दैट, जस्ट रिमेंबर दीज फॉर्मुलाज फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। ऑफ कोर्स इट हेल्प्स टू नो कि वो कहाँ से ये फॉर्मुलाज कहाँ से आ रहे हैं, बट व्हेन यू डूइंग दिस इन एन एग्जाम, आपको सिर्फ फॉर्मुलाज अप्लाई करने हैं। 2 स्टेप्स होती हैं, 3 मार्क्स फ्री के होते हैं। ओके, सो यू कैन डू देम डायरेक्टली लाइक दिस। ओके आयशा बेटा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है। वो बेसिकली ओ लेवल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मेंसुरेशन वाला पार्ट जो होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके वो ओ लेवल वाले कॉन्सेप्ट जो हैं वो स्ट्रांग हो। फॉर्मूला सारे वही यूज हो रहे होते हैं, बट देन यू गेट बेटर दिस विद प्रैक्टिस, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट वाइज कोई बहुत नई चीज नहीं होती, बस क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं अक्सर। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर, उतना you'll start getting better at this. Okay, अच्छा, so we've got the first part here, question number 2 part A, ये हमने कर लिया। Let's do the next part. Next part में उसने क्या कहा है, hence state the greatest and least possible values of 5 sin x minus 3 cos x whole square. Okay, अब ये नीचे क्या लिखा हुआ है, it's basically the same thing as this, बस इसको स्क्वायर कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ था उसको हमने स्क्वायर कर दिया। अच्छा, ऊपर हमने आर की वैल्यू निकाल ली थी, अल्फा की वैल्यू निकाल ली थी, तो वो फॉर्म क्या बनी आपके पास, यहाँ पे लिख लेते हैं। इवेंचुअली जो फॉर्म हमारे पास बनी, दैट्स गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 34, दैट्स आर, इनटू साइन x minus alpha, alpha is 0.54. This is the form that you're getting. So now this thing that you've got here inside the bracket, inside the square, that can be written as square root of 34 sine x minus 0.54 होल स्क्वायर। तो इसको आपने इस फॉर्म में लिख लिया। देखिए, जब भी आपने ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यूज फाइंड करनी होती है या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज फाइंड करनी होती है, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू अ फॉर्म दैट इंक्लूड्स ओनली वन टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी यहाँ पे साइन भी आ रहा है, कॉस भी आ रहा है, इसकी डायरेक्ट रेंज नहीं निकाल सकते। देयर इज नो मेथड फॉर डूइंग दैट। तो पहले आपने इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, आइदर साइन और कॉस। वो हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया कि हमने सिर्फ इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देख लेंगे कि इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट और लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस जहां पर आते हैं, हम कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि साइन जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, साइन की वैल्यू जो होती है वो -1 से लेकर +1 तक होती है। ठीक है, तो इसकी जब ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यूज आप देखोगे, आपको एसेंशली 3 पॉइंट्स चेक करने होते हैं। एक तो आप -1 और +1 देखते हो, लेकिन जब स्क्वायर आ जाता है तो -1 और +1 पे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी। आपको एक पॉइंट और देखना होता है, दैट्स राइट इन द मिडिल, 0 पे आपको देखना होता है, -1 पे देखना होता है, +1 पे देखना होता है। जब स्क्वायर आता है तो -1 +1 पे तो सेम वैल्यूज आ जाती हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, बट 0 पे आपको एक और वैल्यू मिलेगी। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय दैट। आपने एक दफा क्या करना है, साइन वाली जो टर्म है उस पूरे को आपने क्या करना है, आपने 1 इनपुट कर देना है। अगर उसका 1 इनपुट कर देते हो, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम दैट, यू गेट स्क्वायर रूट ऑफ 34 into 1 whole square and that gives you 34। एक वैल्यू आपके पास ये आ गई। यानी जब साइन जो है वो 1 होगा तो आपके पास ये पूरा एक्सप्रेशन 34 के इक्वल होएगा। फिर आप क्या करोगे, स्क्वायर वाले केस के अंदर इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि हमेशा ये सेम ही आएगा, बट इफ यू जस्ट गोइंग टू यूज द स्टैंडर्ड मेथड, आप इसको भी चेक कर लो। -1 आप इनपुट करके देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 34 into -1, ये भी आप करोगे, इट्स विल गेट 34 फ्रॉम दैट। एक वैल्यू तो हमारे पास 34 आ रही है। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू आपको कहां से मिलेगी, दूसरी वैल्यू आपको मिलेगी जब आप इसको 0 के इक्वल कर दोगे। ठीक है, what is that going to give you, square root of 34 into 0 whole square and that gives you 0। अब तीनों में से आपने देख लेना, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको आप मैक्सिमम कह दें, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको आप मिनिमम कह दें। So you'll say the greatest possible value that you've got here for this function, that is 34, and the least possible value of this function is 0। तो basically आपको सिर्फ क्या करना है, इन पॉइंट्स पे चेक कर लेना होता है। साइन या कॉस हो, आपने -1 पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है।
of course given that they are part of the domain, आपके domain के अंदर वो values आ सकती हैं sin और cos की, आपने इन values पे बस check कर लेना है और देखना है आपके function के क्या values हैं. So now it says the curve y equals e raised to power minus 4x into tan x has two stationary points in this interval from x0 to pi over 2. We need to obtain an expression for dy over dx and show that it can be written in this form, where a and b are constants. Okay, let's do this. Y equals e raised to power minus 4x into tan x. Now, you see it's a product. Product को आप directly differentiate नहीं कर सकते. You have to use the product rule. The first term is, let's say u, this is v. Remember what the product rule is. इसको differentiate करेंगे तो आपको पास आना चाहिए uv dash plus vu dash. Okay, let's apply that product rule. U as it is, that means e raised to power minus 4x as it is, into v dash, that means the derivative of tan x, which is secant square x, plus v as it is, that means tan x as it is, into the derivative of e raised to power minus 4x, which is e raised to power minus 4x as it is. However, you have to multiply by the derivative of minus 4x as well, which turns out to be minus 4. आपको इससे multiply करना पड़ेगा. ठीक है? Now we simplify this and we have to somehow prove that this becomes this form. Now, how can we do that? We could take e raised to minus 4x common, right? That has to be outside. So let's take that common first of all. So it simplifies things for us. It becomes e raised to power minus 4x into secant square x plus, or in fact minus, because we have minus 4 here. तो अब यहाँ पे क्या करोगे? minus 4 लिखोगे into e raised to power, no, in fact that is common outside, minus 4 into tan x. This is what we have now. All right. अब देखें उसने क्या करने के लिए कहा है. उसने कहा है आपने इसको किसी तरह से कन्वर्ट करना है इस फॉर्म के अंदर. Now that looks pretty weird, right? इस पे आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा. एक तो उसने ये किया हुआ है कि secant square को भी कॉमन लिया हुआ है. Secant square तो एक टर्म में आ रहा है सिर्फ, इसमें तो secant square है भी नहीं. So how does that make sense? हमारे पास yes tan और secant की एक आइडेंटिटी होती है, which is 1 plus tan square theta. That's identical to secant square theta. However, for that you need tan square. This is tan. तो इसको हम secant square में तो नहीं convert कर सकते. अगर करेंगे तो हमें square root लेना पड़ेगा, and that's going to make things very complicated. So we're not going to do that. Now notice that there's another thing here as well, and that is sine of 2x. Now where is that coming from? यहाँ पे तो हमारे पास double angle है ही नहीं कहीं पे. इसमें तो single angles आ रहे हैं. Sine 2x क्या होता है? Think about that. Sine 2x is 2 into sine x into cos x, right? तो अगर हमारे पास यहाँ पे कहीं पे 2 sin x cos x आ जाए तो हम उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? ये आपकी आइडेंटिटी होती है. आप देखिए फॉर्मूला शीट के अंदर sin 2a is identical to 2 sin a cos a. ऑल राइट. अब sin और cos हमारे पास नहीं है, उसमें कैसे कन्वर्ट करें? What you can do is you can say let's convert tan to sin over cos. Okay, because tan तो नहीं चाहिए ना आपको इस फॉर्म के अंदर, तो आप इसको कन्वर्ट कर लें sin over cos में, and then think about what you can do after that. Okay, so let's can write it as minus 4 into sin x over cos x. ठीक है, हमने इस तरह लिख दिया. अब क्या करें? अब देखें आपको secant square कॉमन लेना है. Secant क्या होता है? Secant is actually reciprocal of cos, है ना? Secant is reciprocal of cos. हमारे पास cos तो यहाँ पर आ गया. अगर हम इस cos को ऊपर ले जाएंगे तो ये secant बन जाएगा, लेकिन हमें secant square कॉमन लेना है, तो हमें एक और cos चाहिए यहाँ पे. Okay, what we can do for that is we can say let's multiply the denominator with another cos. But सिर्फ denominator तो नहीं कर सकते ना, आपको ये पूरा एक्सप्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा. डिनोमिनेटर में आपको एक और cos चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? आप न्यूमरेटर में भी एक cos लिख दो एक्स्ट्रा और डिनोमिनेटर में भी लिख दो. So you're essentially multiplying by cos x over cos x. Can we do that? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, राइट? हम किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी एक्सप्रेशन को हम सेम
एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, दोनों चीजें कर दी यहाँ पे। उसका फायदा क्या होगा, एक तो देखिए न्यूमरेटर में आपके पास कुछ उस तरह की फॉर्म आ गई है, राइट, sin to x वाली फॉर्म। और sin to x के लिए आपको क्या चाहिए था, sin x into cos x, we have sin x into cos x here। और डिनोमिनेटर में आपके पास हो गया cos x into cos x which is cos square x। इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये secant square बन जाएगा, और फिर हम secant square को कॉमन ले सकते हैं, right? So let's try and do that. We have e raised to power minus 4x into secant square x minus 4 into sin x into cos x। अब देखें डिनोमिनेटर में आपके पास दो cos आ रहे हैं, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ये देखें cos square होगा ना, ये जब ऊपर जाएगा तो ये secant square x बन जाएगा। And that solves another problem for us, and that is हम इसमें से secant square भी common ले सकते हैं। We can write this like this: e raised to power minus 4x into secant square x multiplied by 1 minus 4 into sin x into cos x। अब देखिए बाहर वाला पार्ट तो सॉर्ट हो गया, राइट? बाहर हमें क्या चाहिए था, secant square चाहिए था और e raised to power minus 4x चाहिए था। We have e raised to power minus 4x here and we have secant square x here. Now we think about the part that's inside, sin 2x बनाना है इसको, right? और हमें पता है sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x। So इस 4 sin x cos x को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरह लिख देते हैं। हम कहते हैं let's write 4 as 2 multiplied by 2। तो मैं 4 कैसे लिखने लगा, 2 into 2 sin x cos x, right? We can do that, right? 4 sin x cos x, मैंने 4 को ब्रेक कर दिया 2 into 2 में, so it becomes 2 into 2 sin x cos x। And now we have e raised to power minus 4x into secant square x into 1 minus 2, and this thing is sine of 2x. So it becomes 1 minus 2 sine 2x. That is what dy over dx turns out to be. ये आपको करना था, इस फॉर्म में आपने लिख दिया। ऑलराइट, तो आप उस फॉर्म में देखें a की जगह पे क्या आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है और b की जगह पे -2 आ रहा है। Okay, that was quite tricky to be honest. If you're able to get to this point जहाँ पे आपने differentiate कर लिया, you should get 2 marks for that, I think. And then after that, you would get 2 more marks if you're able to convert it to this form exactly. ठीक है, that was the first part of this question. The second part says, hence find the exact x coordinates of the two stationary points. Stationary points कैसे find कर सकते हैं? आपके पास डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट कर दें। That's all that we have to do here. So dy over dx, what is that? Dy over dx is e raised to power minus 4x into secant square x multiplied by 1 minus 2 sine of 2x. What we do is we put this derivative equal to 0. ठीक है, अब ये तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, e raised to power minus 4x secant square x and 1 minus 2 sine 2x, right? अब आपके पास एक प्रोडक्ट है और उसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है या तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 होगी, e raised to power minus 4x should be 0, that's one possibility, or secant square x should be equal to 0, that's another possibility, or 1 minus 2 sine 2x, this should be equal to 0. We get 3 equations from this. आप फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है e is a positive number, किसी भी पॉजिटिव नंबर की आप जो मर्जी पावर ले लें, it can never give you a negative answer, right? अगर आप log लेके सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे इसको, आप देखेंगे राइट साइड पे ln 0 आपको एरर दे देगा, so you won't get anything from this. ठीक है, so first equation say you don't get any solutions, you say this is not possible. The first one is not possible. Let's do the second one now. Secant square x equals 0. Now, how do we think about this? Secant square x equals 0. First of all, what we can do is we can take square root on both sides, right? And that gives us secant x equals 0. Okay,
अब secant x की वैल्यू 0 आ गई है, अब क्या करें? अब हम ये कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लें, that gives us 1 over cos x equals 0, and that gives us cos x equals 1 over 0. Essentially cos x की वैल्यू undefined आ रही है या फिर infinite आ रही है. Is that possible? cos x हमें पता है -1 और 1 के दरमियान में होता है, तो इससे हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आता. This also does not give us anything. If you remember the graph of secant x, तो आप बेशक यहीं पे x को इग्नोर कर सकते हैं. आपको पता है secant x का ग्राफ कभी भी 0 को टच करता ही नहीं है, राइट? वो x एक्सिस को टच करता ही नहीं है. So if you know that, if you remember that, आप इसी पॉइंट पे इग्नोर कर सकते हैं. But if not, आप इसको cos में कन्वर्ट कर लें, and you would realize this is not possible as well. Second equation से भी आपको कुछ नहीं मिलता. The only equation that you're left with is this third one. This one now. What do we get from this? Take 1 to the other side and divide by 2. That gives us sin 2x equals 1 over 2. Right? अब इस equation को हमें solve करना है. Now let's look at the interval that we're given. The interval is from x equals 0 to x equals pi over 2. Pi over 2 included nahi hai, so interval is between 0 and pi over 2 like this. Okay, so one way to do this is you use a substitution. Angle kyunki aapka pura 2x hai, x nahi hai, aap kya keh sakte ho? Let's say a equals 2 times x. All right, and then write this equation in terms of a. So it becomes sine of a equals 1 over 2. Now this is something that we can solve, but you also have to adjust the interval according to that. a की values किस range में होंगी, किस interval में होंगी? आप 0 input करें इसके अंदर, तो a की corresponding value क्या आती है? 0. Input pi over 2 in this, and that gives you a equal to 2 into pi over 2, which is pi. So जो a का interval आता है, that is from 0 to pi. Okay, so now we find the basic angle. Sine alpha equals 1 over 2. Find the basic angle from your calculator, keeping in mind that the angle has to be in radians. Alpha turns out to be pi over 6 from this. Okay, now sine is positive, 1 over 2. Sine positive kahan par hota hai? Sine is positive in the first and the second quadrant. So you could either be here or here. These are the two possibilities. ये दो आपके quadrants possible हैं, और आपके दोनों interval में भी आ रहे हैं. 0 से pi का आपका interval है a का, दोनों interval में आ रहे हैं, तो आपके क्या possibilities बनती हैं? उससे a is either equal to pi over 6 or a is equal to pi minus pi over 6 in the second quadrant. Okay, so these are the two values of a that we get from this. अब हम क्या करेंगे? वापस substitution input कर दें. A was 2x, तो 2x वापस डाल दें इसके अंदर. You get 2x equals pi over 6 and 2x equals 5 pi over 6. And the values of x that you get from this are x equals pi over 12. That's one possibility. And the other possible answer that you're getting from this is x equals 5 pi over 12. These are the two possible values of x that we get from this. These are our answers for this part. Okay, so now we've got differentiation, it seems. Yeah. So the parametric equations of a curve are given like this. We've got two equations. We have to find dy over dx, and you have to prove that dy over dx equals this thing. Okay, सबसे पहले तो dy over dx find कर लेते हैं, उसके बाद हम prove करेंगे कि उसके equal है. How do you find dy over dx in parametric equations? सबसे पहले आप dx over dt find कर लें. dx over dt. 1 का derivative is just 1 minus cos theta. Cos का derivative is minus sine, so this is going to become sine theta. Okay, so we can just do it step by step. dx over dt क्या हो जाएगा? Minus into cos का derivative. Cos का derivative is minus sine theta, so that turns out to be sine theta. That's the derivative. That's dx over dt. Okay, acha. Let's find dy over dt. Cos theta, the derivative of cos is minus sine theta. Minus 1 over 4 cos 2 theta, क्या करेंगे? 1 over 4. Cos के derivative again is minus sine, so this becomes minus sine 2 theta. And then you multiply by the derivative of what is inside here. 2 theta का derivative क्या होगा? 2. We also multiply by that. Let's simplify this. We get minus sine theta plus
2 and 4, they get cancelled. You get 1 over 2 into sine 2 theta. This is dy over dt. So we've got dx over dt and we've got dy over dt. दोनों आ गए आपके पास. अब dy over dx क्या हो जाएगा? उसमें हम chain rule use कर लेंगे. We get dy over dx equal to dy over dt into dt over dx. Okay, what's dy over dt? That is minus sine theta plus 1 over 2 sine 2 theta multiplied by dt over dx. That's basically reciprocal of this thing. It's a reciprocal, which is going to be 1 over sine theta. ये आपके पास dy over dx आ गया. अगर उसने सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए कहा होता, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते, and you could leave it like that. But you're basically asked to show something, show a specific form. आपको ये form exactly इस तरह से show करनी. So you can't leave it like this, right? You can't leave it like this. आपको क्या करना पड़ेगा? उस form में convert करना पड़ेगा. Now what do we have here? We've got half theta. यहाँ पे आपके पास 2 theta भी आ रहा है, theta भी आ रहा है. वहाँ पे half theta आपको चाहिए. So basically double angle identities आपको use करनी पड़ेंगी. Maybe multiple times. Let's do it step by step. पहले तो sine 2 theta को simplify कर लें. Sine 2 theta क्या होता है? We've got this identity given in the formula sheet. Sine 2a is equal to 2 sine a cos a. उसको पहले उसमें convert कर दें. So this becomes minus sine theta plus 1 over 2. Sine 2 theta can be written as 2 sine theta into cos theta multiplied by 1 over sine theta. That's what we have. Now 2 and 2 get cancelled. What are we left with? We're left with minus sine theta plus sine theta cos theta. And we have 1 over sine theta here. We can write that as a fraction now because ऊपर से fraction खत्म हो गया. It's simpler to just write it like this. ये आपके पास आ गया. Now if you think about this, you can actually just take sine theta common. हम sine theta common ले लें. So how does that help? That will help us cancel out sine altogether. We'll be left with minus 1 plus cos theta here, divided by sine theta. Now sine theta and sine theta get cancelled. And we have minus 1 plus cos theta. ये आपके पास आ गया. ठीक है? ये आपके डेरिवेटिव तो आ चुके हैं. अब आपने क्या करना है? इसको किसी तरह से आपने चेंज करना है. minus 2 sin square half theta के अंदर. ये आपने प्रूव करना था इसी तरह से. Now, how can we go from this form to the form that's given there in the question? अब देखें यहाँ पे थीटा है, ये हाफ थीटा है. So basically एंगल का हाफ हो रहा है. तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे डबल एंगल आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. Remember cos की डबल एंगल आइडेंटिटी क्या होती है? I'm going to write that on the side here. Cos 2a was so there are 3 different forms for that. हमें यहाँ पे साइन चाहिए तो साइन वाली फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ. आप बाकी फॉर्मूला शीट में देख सकते हैं. साइन वाली फॉर्म होती है 1 minus 2 sine square a. Right? That's how the sine form looks like. But we don't have 2 theta here, we just have theta. तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे? अगर आप इसी को इस तरह से लिख लो, अगर 2a की जगह यहाँ पे a होता, तो राइट साइड पे एंगल क्या होना होता है? जो भी लेफ्ट साइड पे इधर एंगल आ रहा था उसका हाफ राइट पे होगा. Right? So if you have a on the left side, what are you going to have on the right side? Okay, why does it happen? Yeah. So if you have a on the left side, what are you going to have on the right side? On the right side, you're going to have a over 2. So basically, cos theta की जगह आप क्या लिख सकते हो? Cos theta की जगह आप लिख सकते हो ये पूरी चीज. Okay. So what I'm going to do is I'm going to write cos theta as 1 minus 2 sine square theta over 2. That's how cos theta can be written using this double angle identity. Okay. Now, once we have done that, minus 1 and plus 1, they get cancelled. What are we left with? We're left with minus 2 sine square theta over 2, which is just half theta. And that's what you have to prove. This is dy over dx. ये आपको prove करना था, and you've got that.
Alright, it was slightly tricky because यहाँ पे half theta आ गया, but you have to understand के half theta के लिए भी आपको double angle identity ही use करते हो, बस आपने दोनों sides पे angle जो है वो 2 से divide कर दिया essentially.